Hi, good evening, and welcome to another webinar of AlgoBulls and Edelweiss. Today we have Ashutosh Chandra with us, who will be taking us through the fundamentals of systematic trading. Ashutosh is a financial analyst in system trading and investing at Zumit Capital. I'm just very passionate about this topic. Yeah. So the agenda for this presentation would be like, firstly, we'll be talking about the introduction of system trading. Next up would be the steps which are involved in system trading. And we'll be talking about each steps which are involved in system trading. That is gathering the historical data, that how do you get an idea. Later on, we'll be talking about the trading strategy design, like how do you design a trading strategy, like how do you plan the entries, how do you plan the exits and the stop loss and the position size as well, right? And next up is the very important part of system trading, that is the backtesting. So in backtesting, it is a very rigorous thing to do, and we have got open source platforms which provide backtesting tools. Next up is the validation of results. Like once you have got your backtesting results, like how do you compare one system to another? So we'll be covering up in this part. And lastly, we'll be talking about the optimization. Like why do you need a certain parameter to work on a particular trading system? And the last one would be the live signals which we'll be creating on TradingView. So firstly, what do you mean by system trading? System trading kya hota hai? Guys, you can write something in the chat box by what do you mean by system trading. Any guesses? What do you mean by system trading? Hello. So let me just explain to you what do you mean by system trading. You have got predefined entry and exit rules. Like whenever you create a trading system, आपके पास entry signals होते हैं, आपके पास exit signals होते हैं. The moment the system checks the entry signals, तब आप entry लोगे. And if the entry is true, then you will enter in a position. And after that, आपके exit conditions check होते रहेंगे. So every time the exit condition takes place, and if it's true, तब आप exit करोगे आपके entry signal से, right? और re-entry आपकी तब होगी when you get the new entry signal. So that's how the system trading works. So why do we need a trading system? I mean, most of us have started our journey as a discretionary trader. जो मतलब मोस्टली सबने ऐसे शुरुआत की होगी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करके कि आज CNBC पे किसी ने ये बोल दिया कि टारगेट आप ये है आपका और स्टॉप लॉस आपका ये है, उस बेसिस पे आपने बाय सेल कर लिया, फिर बाद में आपको पता चला दैट दिस इजंट समथिंग दैट इज वर्किंग इन द लॉन्ग रन. तो फिर बाद में आपने धीरे धीरे शुरुआत की. कुछ लोगों ने बोला कि इंट्राडे वर्क्स फॉर मी, कुछ लोगों ने बोला कि पोजिशनल ट्रेडिंग वर्क्स फॉर देम, कुछ लोगों ने बोला कि एक्सपायरी वाले दिन ही पैसे कमाते हैं लोग, कुछ लोगों ने बोला कि सिर्फ ऑप्शंस में पैसे कमाते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि सब कुछ मिला दो उसमें पैसे बन जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. आई मीन I have a huge respect for the discretionary traders, but you need to have something systematic. You need to have a systematic approach. Like if you create systems for an intraday, for a positional, for a swing, for an expiry based ones, right? Be it the algo execution, be it the semi algo, be it the simple आपके entry exit rules के हिसाब से, तो उस हिसाब से being a systematic trader आपको पता है कि कब आपको कौन से trades लेने हैं. कभी ये हॉच पॉच आएगी नहीं आपके ट्रेडिंग जर्नी में. So the life cycle of a trading system. So these are the basic steps which you need to create a trading system. So firstly, let me just brief about each of them. First one is the historical data gathering. Like to create a trading system, you need to quantify your system, right? आपके पास कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आप हिस्टोरिकली बैकटेस्ट कर सको. अगर आप बैकटेस्ट नहीं कर पाओगे तो आप उसको
इन फ्यूचर आपको पता नहीं रहेगा कि उसके एग्जैक्टली रिजल्ट्स कैसे आएंगे. For that instance, you need to have the historical data. Ab historical data is very humongous in nature. For example, आपके जो daily data points होते हैं, the daily data which you can find on NSE, niftyindices.com, तो वहाँ पे those are limited in number compared to the intraday level historical data. अगर आप कुछ ऐसी strategies plan कर रहे हैं which are into intraday ट्रेडिंग, तो उसके लिए आपके पास कम से कम एक से 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिस्टोरिकल डेटा होने चाहिए. वो भी सिर्फ आई गेस लास्ट 1 साल के नहीं, अच्छे खासे करीब 5 से 10 साल के होने चाहिए. या सो नेक्स्ट अप इज द आइडिया जनरेशन. एक बार आपके पास डेटा आ गया, तब आप उस डेटा पे किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है. उसके लिए आपको आइडिया जनरेट करना पड़ेगा. Your idea could be around directional trading, could be around non-directional trading. Next up is the trading strategy design. So the trading strategy design consists of किस टाइप की आप एंट्रीज करना चाहते हैं. क्या आपकी एंट्रीज लिमिट ऑर्डर होगी, मार्केट ऑर्डर होगी, स्टॉप लॉस ऑर्डर होगी, किस टाइप की पोजीशन साइज आप प्रेफर करोगे. इनफैक्ट आप एग्जिट MTM बेस्ड करना चाहोगे या स्टॉप लॉस बेस्ड करना चाहोगे, तो उस हिसाब से आप चीज़ें देख सकते हैं फॉर ट्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन. नेक्स्ट अप is the backtesting part. Once you have your trading strategy in place, then you will be backtesting it on the historical data that you have gathered. We have got tons and tons of open source tools for backtesting, and we'll be discussing it in the later slides. Uske baad, once you have your backtesting in place, you will be getting some good or bad results of your trading system. तो उसको आप क्वांटिफाई कैसे करोगे, आप कौन कौन से की एलिमेंट्स पे देखोगे, आप बैक टेस्टिंग रिपोर्ट कैसे इंटरप्रेट करो. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट. लास्टली, जो आपने पैरामीटर्स यूज किए थे टू क्रिएट द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, विल इट बी वायबल इन द फ्यूचर एज वेल. जो आपने बैक टेस्टिंग से जो ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, जो आपके जो रोजी रिजल्ट्स आ रहे थे, will that create a trading edge in the future as well. तो वो आपको चेक करना रहेगा. और अगर उसमें आपको अगर इन फ्यूचर वो अगर ट्रेडिंग एज लूज करता है, तो व्हाट कुड बी द रीजन. इफ इट लूजेस एन एज, तो आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हो, आप उसके पैरामीटर्स को ट्वीक कैसे कर सकते हो टू get the system sustainable. So we'll be discussing that in the optimization part. Someone wrote that the chat is disabled right now. Mr. Thomas has written it. Okay. Okay, so let's talk about the historical data gathering and cleaning part. So these are the basic things when you're gathering the data. So these are the basic things which you need in your data: the date, the open, high, low, close, and the volume. And these are the sources which I have mentioned over here. For instance, you can just go to the NSE website, and if you were to download the historical data for the last 1 year, from 1st July till yesterday, just a minute, yeah. Perfect. So like this, you can get the daily data. If you were to design some strategies around positional trading. Yeah. So these are the other sources जो आप ऐसे check कर सकते हो. For instance, Nifty indices. This is one of the cleanest platforms जहाँ पे आपको daily data आराम से मिल जाएगा. You can select the index type as Nifty 50 and Bank Nifty as well. Yeah.
So this was the second source. What else? Yahoo Finance is one of my favorites nowadays. In the CI, yeah. You just click on the historical data, and you can fetch all the historical prices on daily, weekly, and monthly basis. Yeah. So if you, for instance, download one of the historical data, in the CSV format, and this is how the historical data looks like. First July 2021 से लेके 30th June 2022 तक. So we can use these tools to gather the historical data. So next up is the idea generation part. So this is one of the key elements in system trading. तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप की आप स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हो. लाइक आई सेड अर्लियर के आप इंट्राडे स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, पोजिशनल बना सकते हो, स्विंग बेस्ड बना सकते हो, एक्सपायरी बेस्ड बना सकते हो. उसके लिए आपको सोचना सबसे पहले किस टाइप का आपको डेटा चाहिए. Like for example, if I were to design a trading strategy around positional or swing trading, तो उसके लिए मुझे डेली टू वीकली हिस्टोरिकल डेटा लगेगा, राइट. और उसके अराउंड फिर मैं सोचूंगा कि किस टाइप के मुझे इंडिकेटर्स यूज करने हैं. लाइक फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन I'll be sticking to the indicators, technical indicators part rather than the price action ones. ठीक है. तो इसमें 3 टाइप के कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है इंडिकेटर्स को. The trend indicators, momentum indicators, and the volatility indicators. I guess most of us are well aware of this stuff. तो इसमें फॉर एग्जांपल अब आइडिया इंडिकेटर्स तो हमें पता है कि यूज कैसे होता है कि 200 MA के ऊपर गया तो इट्स if the close is above 200 MA तो it's bullish and below that it's bearish, right. पर अभी हमें इसके अराउंड स्ट्रैटेजीज डिजाइन करनी है. वी नो दैट RSI अगर 30 के नीचे जाता है तो it becomes bearish, and if it shorts up to 70 तो it's very bullish. पर इसको यूज कैसे करना है एज अ सिस्टम, हम इसको क्लब कैसे करेंगे और कौन कौन से टाइम फ्रेम हमको चूज करने हैं, बी इट 30-minute टाइम फ्रेम, बी इट एन आवर टाइम फ्रेम और अ डेली टाइम फ्रेम, राइट. तो यही सब हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन और आइडिया जनरेशन में क्रिएट करेंगे. तो एक काफी इंटरेस्टिंग सोर्स है मेरे पास जहाँ पे इवन यू गाइस कैन लुक अप टू, ट्रेडिंग व्यू. TradingView has a really great community. Herein you can just pick the ideas of the best coders. TradingView की ऐसे कोडिंग पाइनस्क्रिप्ट में होती है, पाइनस्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है. इट्स वेरी सिंपल. तो यहाँ पे अभी जैसे आप कम्युनिटी पे जाओगे, ट्रेड आइडियाज, एंड इफ यू गो टू इंडाइसेस, so you will get something like this. Like people who are good coders, they have strategies posted over here. और इनके इनफैक्ट आप बैक टेस्टिंग भी देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स, इफ यू गो टू द स्ट्रैटेजीज, तो यहाँ पे इफ यू सर्च फॉर लेट्स से अ मूविंग एवरेज, तो यू विल गेट स्ट्रैटेजीज अराउंड मूविंग एवरेज. जस्ट अ मिनट. एक सिंपल मूविंग एवरेज भी नहीं दिख रही है. Yeah, this is the 5 EMA above close. So this is a very simple moving average जो क्लोज आपका है. तो इसमें आप ये नोट्स पढ़ सकते हो किस हिसाब से इसने स्ट्रैटेजी बनाई दिस पर्टिकुलर यूजर ने. और दिस इज द कोड ऑफ द स्ट्रैटेजी. यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आती थी. जस्ट अ मिनट. Let me see.
Let's take this as an example. I guess they have removed the performance in this new update of TradingView. Actually, यहाँ पे performance भी आती थी पहले about the trading system that these guys have created. So you can take the cues from these community scripts कि आपको किस टाइप के ऐसे strategies बनाने हैं. So it helps कि अगर आप सोच रहे हो कि simple moving average और RSI crossovers का use करोगे to create a system, तो यहाँ से आप cues ले सकते हो to create a system, right? Yeah. So the next part in the idea generation is the type of trading which you want to do. Like कुछ ऐसे लोग होते हैं they prefer only trend following. कुछ ऐसे होते हैं जो pullbacks और non-directional trading में ही they prefer trading. तो इसमें if you have a combination of both of these systems, then you will be in the market very profitable as per me. तो इसमें जैसे कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग में फिर आप चेक करोगे कि किस टाइप के आपके इंडिकेटर्स यूज होते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग वाले कौन कौन से होते हैं, उसके हिसाब उसके अराउंड आप अपने इंडिकेटर्स यूज करके अब सिस्टम बनाओगे. नॉन डायरेक्शनल में आप अपना चेक करोगे. फॉर एग्जांपल आपके जो वॉलिटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर्स हैं, बॉलिंजर बैंड, एटीआर यूज करके, तो उसके अराउंड आप फिर बाद में नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग सिस्टम्स बना सकते हैं. तो these are the key elements in trading strategy design. तो obviously हमारी strategy long होनी चाहिए, short only होनी चाहिए, या a mix of both. तो that's really important to define. And किस time frame पे हम trade करना चाहेंगे, हमारी जो ये strategy जो हम बनाने वाले हैं. तो it could be a 5-minute time frame, it could be 15, 20, जो भी मतलब आप चाहो. तो वो डिपेंड करता है, आपको अपना ट्रेडिंग प्रोफाइल डिफाइन करना पड़ेगा बिफोर यू गेट इनटू क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम. इवन यू कैन ऑफ कोर्स, अगर आपके पास यू हैव योर इंडिकेटर्स डिफाइंड, तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स से चेक कर सकते हो इन विच टाइम फ्रेम योर ट्रेडिंग सिस्टम इज प्रॉफिटेबल, राइट. एंड द एंट्रीज एंड द एग्जिट्स, लाइक एंट्री में आप अगर कैंडल के ओपन पे आप एंट्री लोगे या कैंडल के क्लोज पे आप एंट्री लोगे, एंड दिस कैंडल इज द सिग्नल कैंडल फॉर द रेफरेंस. या और या तो आप फिर बाद में सिग्नल कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पे भी आप एंट्रीज ले सकते हो, राइट. एंड सेम गोज फॉर द एग्जिट्स. स्टॉप लॉस बेस्ड आप करना चाहते हो, एमटीएम बेस्ड करना चाहते हो, इवन द पोजीशन साइज के व्हेन योर सिस्टम कम्स इनटू अ लॉस, आप डू यू वांट टू डबल अप योर पोजीशन और डू यू वांट टू स्टिक टू द previous one. So these are the key elements which you need to define in your trading system. And of course, you can hit and try multiple combinations of all of these elements. So for example, मैंने यहाँ पे लिया है an EMA crossover. I guess EMA crossover needs no introduction. कि आपका एक slow moving average होता है. This is the slow moving average. और एक fast moving average होता है. When the fast moving average cuts the slow moving average above, तो तब आप लॉन्ग पोजीशन लोगे, द लॉन्ग एंट्री. और उसका जब उल्टा होता है तब आप लॉन्ग एग्जिट करोगे, एंड द लॉन्ग एंट्री इक्वल्स टू द शॉर्ट एग्जिट, वेयर एज द लॉन्ग एग्जिट इक्वल्स टू द शॉर्ट एंट्री. मतलब कि आपका जब स्लो मूविंग एवरेज फास्ट मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट करेगा, तब आपका शॉर्ट एंट्री होगा. तो for this example, I've taken a long short strategy, और हमारा जो key reference time frame जो होगा for trading is 1 day. So I guess most of us know the very predefined moving averages, जैसे 20 EMA और 50 EMA. Like we use the 20-50 EMA हमारे charts पे all the time, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे key levels होते हैं ये, और वीकली डेली टाइम फ्रेम में इसका बहुत ऐसे इंपॉर्टेंस रहता है. तो इस एग्जांपल के लिए मैं फास्ट मूविंग एवरेज को 20 EMA लूंगा और 50 EMA को मैं स्लो मूविंग एवरेज के जैसे लूंगा. तो आई हैव रिटन दिस कोड ऑन ट्रेडिंग व्यू 20-50 EMA का क्रॉसओवर की टेस्टिंग करने के लिए कि whenever the 20 EMA
crosses the 50 EMA, so we'll go long. And whenever the 50 EMA crosses above the 20 EMA, we'll go short. तो इसके results क्या लगता है आपको कैसे होंगे? Will it be good? Will it be bad compared to the benchmark? And I have taken the Nifty futures as a reference. S&P 100. S&P Nifty futures. So like I said, we'll be starting off with the daily time frame. The daily time frame में 20 or 50 EMA का अगर मैं crossover लूँ, then what are the results? So I'll just rerun the code. Yeah. So on a daily time frame of 20 and 50 period moving average crossover, these are the statistics. 3% net profit, total 13 trades. I'll tell you the time frame कब से कब तक ये profitable था, और 23% hit rate है इसका. And we'll be discussing about these factors later on in our slides. And if we were, and this is a long short strategy, mind you. तो हमारे जो सिस्टम है इसने it has given 3% profit, whereas the buy and hold return, मतलब कि अगर आपने index futures buy and hold किया होता तो you would have outperformed this strategy of 2050 EMA crossover. तो अभी if I were to tweak certain parameters, for example मैं अगर daily time frame से hourly time frame पे switch करूँ, then are my results improving? Yes, it is. So यहाँ पे you get a net profit of around 28.78%, and short side कुछ इसने ज़्यादा कमाया नहीं, long side ही थोड़ा बहुत चला. Net profit is around 28.78, which has outperformed the benchmark returns. And this has been tested since 2019. The first entry that the system took was in 2019. And this is on an hourly time frame. So as you can see that हमने बस एक parameter change किया for our strategy, so we got better results, right? And let me just test this when I decrease the time frame from 1 hour to 30 minutes. 30 minutes में there isn't much change. Lastly, it was for an hour it was 28%, और अभी भी almost 28% है. Benchmark को of course perform कर रहा है, but you have lesser number of trades. पहले the system was backtested from 2019, और अभी 30 minute time frame के लिए it has been backtested from 2020. तो थोड़े data samples कम हुए हैं, but overall इसने index को outperform किया है by good margin, I must say, and good hit rate as well. Number of trades are 48. So this was about the 2050 EMA. Like I said, what if we change these values as well, right? What are the best case? We always look at the best parameters which we need in our trading system, so that we have an edge over others. ये काफी लोग use करते हैं 2050. Most of them use these parameters. But what's the best case? It's not 2050, I guess. So what if I change it from 2050 to 10 and 40? Let me just check it on a 30-minute time frame. Yeah, so the results have increased. Earlier it was 28%, now it's 36%. And the drawdown has also decreased. वहाँ पे benchmark को again it's outperforming. Short side you can see that it's good.
और backtesting since 2020 होगा, yeah, since 2020. So what if I tweak it to 15 minutes? How's my strategy doing? The 10 and 40 time frame on 50-minute. Has it improved? No, it hasn't. And also the data points have decreased. Negative, negative, buy and hold. Still, it's outperforming the buy and hold. But yeah, negative profit and loss कोई अपने trading system में देखना नहीं चाहेगा, to be honest. And of course, data points have also decreased since 2021 से. So now, so I have tested the system, or the best case which I got for this moving average crossovers was 2 and 60. Now let's check this out on a 30-minute and an hour time frame. Yeah, as you can see here, for the 30-minute time frame, our system has given returns of around 50%, and the drawdown जो पहले which was around 8-ish%, that has also come down to 5%. Profitability has increased. आपका जो hit rate है, that has increased. And let me check the performance summary. Yeah, of course, it is outperforming the benchmark. And yeah, the short side has also done some good profits. And the testing was done since 2020. Yeah. So this was about the 30-minute time frame. And now let's talk about the hourly time frame. Over here, you can see the signal कि कब आपका long आया था, कब आपका short गया था. Latest ये आपको दिख रहा है. Longer time frame पे 1 hour पे आपका around 54% है, whereas पीछे 30-minute time frame पे आपका profit था around 50% और अभी 54% है. So as you can see के higher the time frame, almost flattish the profits are, right? So यहाँ पे, of course, it is outperforming the benchmark. Let us check out the equity curve. The drawdown looks same. The यहाँ देखिए, for an hour time frame, 1 घंटे वाला जो time frame है आपका, उसके लिए you are taking a hit of around 76%. 24% आप profitable हो और 76 times आप गलत हो on an hour time frame. If you have the capacity to bear such losses, मतलब 76 times you are willing to lose your trades, then good luck to you. And looking at this, this is a decent one compared to the hourly time frame system, right? 32% is fairly better than the previous one. Drawdown, you get the same amount of drawdown, or इस हिसाब से this is a bit favorable, right? So that's how you can create your system. And now let me just let me just talk about the backtesting part right now. So these are the tools which you can use. अभी मैंने आपको बताया trading view. वहाँ पे you don't need the historical data. वहाँ पे you can easily, because trading view is cloud based, वहाँ पे आप easily historical data backtesting कर सकते हो, but it has its own limitation, and this is free. Like you can't test your strategies beyond 2019 से पहले आप टेस्ट नहीं कर सकते उसको for higher time frames. AMI broker, so the system which we created over here was first created on AMI broker. जो 2 और 60 वाला जो था, the 2 as the value of the fast moving average and 60 as the value of the slow moving average was optimized on AMI broker. Actually, this is the first
language जो मैंने सीखी थी around trading, and it's very simple. And if you wish to start your backtesting on AMI Broker, then there's this book by Howard Bandy, Introduction to AMI Broker. You can just refer to this book, and it covers all the aspects of how to backtest, how to optimize, how to create advanced trading systems using AMI Broker. And it's really simple और काफ़ी easy है लोगों के लिए create करना. Once you create your system, then you can easily deploy it on trading view. My bad. So let me see if I have a signal of this strategy. EMA Crossover 260. Yes, I do. Yeah. So अभी जो आपने back testing देखी थी, so I have created a signal for me. So every time I have this condition satisfied for long and short, I get a signal on trading view like this. So trading view tells me where do I need to go long, where do I need to go short, based on the strategy that I had created. यहाँ पे आप देख सकते हैं historical signals इसके कैसे रहे हैं. You went long around this candle and you squared off your long over here. So you can see these things come in handy. And of course, अगर आपको इसका execution आपको algo based करना है, then you can avail your broker's API as well. So yeah, also you can create the alert for the respective trading signals. Like this. So whenever my strategy goes long, once per bar close, I'll go, and TradingView notifies me on my email, on my app. It shows the pop-up, so I can create it. Next up is Python. Python is something I've started off lately, and it's very useful if अगर आपके systems ऐसे काफी customized हैं, अगर आपको कुछ ऐसे systems बनाने हैं which have things into price action, which are into breakouts, 20-day high mara, tab you'll go long or you'll go short, I don't know, along with some indicator, then you can use Python, because it gives you a customized solution for your backtesting needs. So this is very good stuff. And also Python pay, you can backtest your index strategies, index future strategies, as well as index options. And for options, of course, you need to have the historical options data. Next up, if you don't want to get into the hassle of getting the historical data around options, then you can, of course, backtest your strategies in StockMock. So StockMock is a platform which I really like. उस पे आप जितने भी आपके जो options के strategies हैं, you can backtest it. Also, StockMock पे आपके जो slippages और brokerage होते हैं, वो already included होते हैं. जो historical data पे आप backtest करते हो, तो आपकी जो strategies के जो results मिलते हैं, they are almost realistic to the real ones. So now, how do you validate your backtesting results? हमारे पास strategy आ गई, हमारे पास backtesting हो गई हमारी strategy की, but how do you quantify it? कुछ ऐसे certain parameters होंगे, right, to evaluate your trading system. You create multiple trading systems. It could be 1, it could be 10, it could be 50, but how do you quantify it? So these are the basic validation factors which you can use. Firstly is the main कितना दे दिया system, कितना बनाया system ने historically. So this is the CAGR, जो annual returns, cumulative annual returns, हर साल आपका system ने जो profit बनाया. Second up is the maximum drawdown. आपका जो peak था equity curve का, वहाँ से इसने dip मारा, कितना % का dip था, what was the percentage?
you have to calculate it. Let's say if you have a system that generates, let's take an example. You have a system A that generates 40% of returns annually for 5 years, और वो उसका max drawdown रहेगा आपका around 50%. So would you even consider that system to be tradable? क्योंकि जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा सिस्टम पैसा लूज करने का probability रखता है, right? And then there is system B that generates cumulative returns of around 30%, let's assume, for 5 years, और उसका drawdown is around 15%, 15%. So of course the returns are lesser compared to system 1, system A, but the drawdown, your risk, you have to manage your risk. In trading, it's all about quantifying and managing your risk, right? So second system you are willing to take lesser risk compared to the first one, इसलिए you would prefer the second one. Also, ये दो are individual factors, right? इसको अगर क्लब करेंगे तो क्लब करने के बाद ये पैरामीटर आता है, that is the Kalmar ratio, which we call it. So Kalmar ratio is nothing but the returns that the system has generated over the period of time divided by the maximum drawdown. So greater this value, the better our strategy. Let's say अगर आपका system है, system 1 has a Kalmar of around 0.5 and system B has a Kalmar of around 1.5, right? तो उसमें आपको पता है कि आपके पास drawdown आपका system 2 में कम है, इसलिए you would prefer the system 2 with better Kalmar, right? Next up is the profit factor. Profit factor is nothing but the gross profit divided by gross loss. कितना हमारा system ने कमाया divided by कितना हमारे system ने गवाया. Greater the number, better the system. Once again, right? Win percentage. So you must have gone through a lot of YouTube channels who have got thumbnails which says 99% hit rate, 100% win rate, right? So उनको पूछो कि 100% win rate है, what are the other parameters, what are the other factors? Can you are you even able to quantify it? So there are systems let's take an example of this system that we created. It has a profitability percentage of, just a minute. Yeah, it was only profitable 32% of the times. Well, out of 100, 32%, 32 times, ये profitable था. Baki time it made losses. So that's how the journey of a trend following system goes, right? अगर आप एक ट्रेंड को राइड कर रहे हो तो आपको बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जब आप प्रॉफिटेबल हो गए. Alert from low battery. ऐसा. Just a minute, let me charge my system. Yeah. I was talking about the win percentage. So people who talk about win percentage is really important. You need to look at other factors as well. Okay, what's the Kalmar, what's the profit factor? So win percentage isn't the only thing when it comes to system trading. उसके अलावा और भी सब चीजें होती हैं. Next up is the expectancy part. So in the expectancy part, आप check करोगे कि in the backtest report, मेरा system viable है कि नहीं.
right? So expectancy is nothing but a combination of win percentage into the risk to reward ratio minus the loss percentage. Higher the value of expectancy, higher the viability of our strategies. Expectancy की value 0 के above होनी चाहिए, right? And risk to reward, of course, most of us talk about the risk to reward, the risk we are willing to take in order to earn the reward. Like when you talk about the trend following systems may you have a risk to reward of 1:3. Like to win 1 rupee, to win 3 rupees, we are willing to lose 1 rupee. Whereas for non-directional trading system, तो वहाँ पे आपका 1:1 और in fact risk to reward काफी कम हो जाता है unless you are adjusting your strategy. So the optimization part, like I told you, optimization is necessary for the viability of our trading system. अभी मैंने जैसे आपको बताया कि like how I changed the values of the EMA crossover based on the historical optimization that we did. So let me show you another example for this optimization. So I've coded this in Python, or I've taken the example of Reliance, which is I've taken the daily chart of Reliance since 2009 और कल तक का है ये. Let me just show you the data. किस टाइप का डेटा है हमारे पास. Yeah, perfect. Reliance. So this is the historical data जो हमारे सिस्टम ने डाउनलोड किया है since 2009 7 सितंबर से लेके 13th of July. तो ओपन हाई लो क्लोज हमने निकाल लिया है हिस्टोरिकल डेटा और डेली टाइम फ्रेम का है एज यू कैन सी. So I'll be running some optimization on this. So most of us know the indicator RSI, right? And by default we have the value as 14 period. जो लेंथ होती है RSI की 14 होती है. तो अभी what's the best case for Reliance? Let's see. अभी मैं Reliance के लिए RSI की period, I'll take the range from 10 to 100. I don't know what would be the best case. What would be the best RSI length for Reliance? I'll assume के let's say 10 period से लेके 100 period को I want my system to test. Okay. Which is the best parameter? Okay. बाय सेल मुझे नहीं पता कि मेरा सिस्टम कब करेगा. मुझे ये नहीं पता कि मेरा सिस्टम जब 40 की वैल्यू क्रॉस करेगा तब करेगा या जब 30 की वैल्यू को क्रॉस करेगा तब करेगा. इवन फॉर द एग्जिट्स आई हैव नो क्लू. सो आई विल आस्क माय सिस्टम कि व्हाट वुड बी द बेस्ट सिनेरियो in case of Reliance. And when I run these codes, so I've got the returns for the best pairs of RSI length जो जितने पीरियड का हमारा होना था, किस वैल्यू को क्रॉस करना चाहिए RSI, किस वैल्यू को क्रॉस अबव करना चाहिए फॉर एग्जिटिंग द लॉन्ग पोजीशन. माइंड यू दिस इज लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी जो हम कैश ओनली कर रहे हैं रिलायंस पे. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रिलायंस फ्यूचर्स. तो अब मैं चेक करूंगा कि कौन सा बेस्ट केस है. तो आई जस्ट रन दिस कोड.
look at the parameters. Yeah. So this is a 3D model of our optimization process. यहाँ पे आप देख रहे हो जो RSI लेंथ जो है, मतलब जो मैं RSI 14 पीरियड जो बाय डिफॉल्ट था उसकी बात जो कर रहा था, ओवर हियर इट्स द RSI लेंथ. कितना को क्रॉस करना चाहिए, कितने के अबव RSI की वैल्यू होनी चाहिए in order for me to take a long entry, in order for me to initiate a long entry. और यहाँ पे कितने पे मुझे बेचना चाहिए, कौन सी वैल्यू होगी वो RSI की जिस पे मुझे बेचना चाहिए. तो if I zoom in a bit, और यहाँ पे मेरे ऐसे रिटर्न्स कैलकुलेटेड. And over here, as you can see, the term value, ये value is in terms of percentage. मतलब कि this one's around 925%, 0.925 into 100 आप करोगे तो परसेंटेज में आपका कन्वर्ट होगा, तो it's 925%. यहाँ क्लस्टरिंग, I'll check the clustering के मेरी ये जो वैल्यू वाली जो है वैल्यू वो कहाँ पे बढ़ रही है. Over here, यहाँ पे around I'm getting 4,266%. Okay, somewhere over here 58, 60, 61 यहाँ पे. तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे कुछ देर में. तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि आपकी whenever the RSI 60 period crosses above 40, so I'll go long on Reliance daily chart. And whenever this value crosses below 40, I'll sell my long position, I'll exit my long position. तो 60 के आसपास क्लस्टरिंग जो आप देख रहे हो उसमें यू कैन सी द मैक्सिमम क्लस्टरिंग वैल्यूज, वहाँ पे आपके प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अच्छी खासी दिख रही है. तो लेट मी जस्ट रन द कोड अगेन with our defined parameters. 60 पीरियड का RSI हम कंसिडर कर रहे हैं, और जब 60 पीरियड का RSI 40 के अब क्रॉस करेगा then we'll go long, and whenever it crosses below 40 we'll exit our long position like I said earlier. So we'll backtest this. So let's check out the stats. और stats क्या आपके कंपैरिजन करेंगे with the buy and hold रिलायंस की स्ट्रैटेजी के साथ. मतलब कि अगर आपने 7 सितंबर 2009 में रिलायंस को बाय किया होता और आज तक होल्ड किया होता तो आपने 379% कमाए होते. वेयर इन अगर आपने हमारी स्ट्रैटेजी यूज की होती और RSI वैल्यू वाली, so you would have outperformed the buy and hold Reliance strategy. So this is part of the optimization process. In fact, आप benchmark के साथ compare भी कर सकते हैं. Let's look at some visuals. Yeah. So the grayish line depicts the buy and hold Reliance strategy. कि 2009 में आपने पोजीशन बनाई और फिर बाद में करते 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 यहाँ पे आपकी वैल्यू हुई अराउंड 479% बाय एंड होल्ड. वेयर एज जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है it has been outperforming quite a while. I mean, it has been outperforming since I guess 2011. Yeah, 2011. तब से लेके अभी तक it has some good amount of outperformance since 2011. Right. So that's how the optimization process works. That's all from my side, guys. Thank you.
Hello. Yes, Ashutosh, we can hear Yes. you. So, the audience, if you have any questions related to the webinar we just had, you can post your question in the Q&A box. So, we will keep the webinar open for a minute in case we get any questions, and then we would answer that. Any questions? Audience, in case if you have any questions, you can type in your questions in the Q&A box, and Ashutosh would be answering them. So we have a question: can we test price action strategies from? Like I said earlier, okay, price action strategies need a good amount of data. I mean, let's say you were to test price action strategy on a daily time frame, right? So for daily time frame, you can take the historical data, but like I said, AMI broker doesn't have that custom thing to test the price action strategy, whereas Python can be used to create a custom price action strategies. So yeah, you can test it. Okay, thank you, Ashutosh. The next question we have is from Mr. Kaushik. He asks us, which backtesting library did you use, and how can he learn it? Can you share some resources? Sure. Let me just share my screen again. Can you see my screen? Hello? Yes, your screen is visible, Ashutosh. Perfect. So the library which I used for the backtesting was the vector VTA. That's the vector backtesting part. This is the documentation which you can refer to for this backtesting. I'll just post this link in the chat box. That's fine. Is this the one? I'll just type it in here. Yeah. So this was one of the libraries that I used. And the next library, this is the Yahoo Finance library, which I used to download the historical data for Reliance. So these are the two basic libraries that I used to backtest it on the Python. Any questions? Any other questions, guys? I think we are done with all the questions. Perfect. Thank you so much, Ashutosh, for this session. We would love to have you back again next month on our series of webinars that we do for the month. For sure. Thanks for having me. Cheers. Thank you, audience, for your time. Thank you for listening out so patiently. I'm sure you must have gained a lot out of this session. Thank you, Snail, for your presence. Thank you, everyone. You have a good day. Thank you, guys.